Hey, hi guys. My name is Saurabh and again welcome back to my YouTube channel. So, in the previous video, we have seen about the DQL commands, right? How basically we write queries, how we retrieve the data, okay? That we have seen in our last video. In this today's video, we will see what are SQL joins. Yeah. So, what is a clause? Okay. So, join clause is a clause which combines the rows of the tables, right? Two tables or more than two tables, so it combines the rows of two or more tables based on some related columns. Okay, they have some relation in the in multiple tables, right? If they have some related columns in that, then you can join that two tables, right? Based on that related columns, basically we combine the rows on the basis of that matching columns. Okay, so that are joins. Now there are certain types of joins: uh, inner join, left join, right join, outer join, right, cross join, self join. So these all types we will go one by one, and I will explain each and every type with examples. We will see in our SQL server how to execute joins, how to join in our practically two tables, right? You can join multiple tables also, okay? That we will see later. Initially in this video, we'll just see how to join two tables, okay? And all the types here, okay? So let's go to SQL Server. Hi guys. Yeah, so we are at our SQL server. So we have these two tables, guys, students and courses table. Okay, first we will see how our table looks. Okay, okay. So these two tables we have. I can zoom. I can't zoom the output. Okay, but yeah, these two tables we have students and courses. Now we want to join these two tables. Okay, so how we can do that, right? देखो अभी पहले इस टेबल्स को समझते हैं स्टूडेंट्स टेबल में हमें ये चीज सारी चीजें हमने पहले क्रिएट ये टेबल हमने पहले डीक्यूएल में देखा था which has id name age city email okay and we have courses table जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल किया है that we can see in our courses table second is courses table where you can see your primary column is a course ID, course name, and student ID. Student ID is the ID of a students, right? Like which course is enrolled by which students, right? That we can uh, get understanding by using the student ID column. Okay, so these two tables we have okay and we want to join these two tables okay like how we can do that okay so first we will understand the definition of join is what a join clause combines the rows from the two or more tables on the base of a related columns right दो टेबल्स हम एक तरीके से ज्वाइन करते हैं इसका मतलब क्या करते हैं हम रोज मैचिंग रोज को एक तरीके से कंबाइन करते हैं ठीक है और ये किसके किसके हेल्प से हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन द टू टेबल्स ओके सो दिस इज जॉइंस okay now we will see that there are certain types of joins the first one is a inner join okay now what is inner join अब देखो भाई अब जब दो टेबल है जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रोज मैचिंग हो मेरे दो दो टेबल्स की राइट कुछ कुछ ऐसी रोज रहेगी जो फर्स्ट टेबल में है सेकंड टेबल में नहीं है सेकंड टेबल में है फर्स्ट टेबल में नहीं है राइट तो इनर जॉइन का मतलब क्या है इनर जॉइन मैचेस ओनली सॉरी इनर जॉइन कंबाइंस only the rows which are matching right it combine the matching rows only okay it keeps only rows that match in both tables
okay, which are matching. It basically keeps the matching rows between the two tables. Okay, that is inner join. Okay, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यही स्टूडेंट्स और कोर्सेज टेबल की जो मैचिंग रोज है एक तरीके से कंबाइन हो जाएगी, राइट? वी कैन यू कैन सी बाय द वेन डायग्राम आल्सो। ओके, एक तरीके का दो टेबल्स का इंटरसेक्शन कह लो कि जो कंबाइन चीजें है बस वही आपको एक तरीके से इनर जॉइन में दिखेगी, दैट इज इनर जॉइन। ओके, सो विल सी व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ अ स्पेसिफिक SQL जॉइन का सिंटैक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, ये तो क्वेरी है। सबसे पहले वी विल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार का मतलब क्या है? We already seen this right in previous video. Star means we have to select all the columns. Okay, अब स्टार यहाँ पे हमने लगाया है, हम ज्वाइन कर रहे हैं दो टेबल्स को, तो स्टार मतलब इट विल टेक कॉलम्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड टेबल। दोनों टेबल की सारी कॉलम्स यहाँ पे आ जाएगी स्टार स्टार में। ठीक है, सिंटैक्स यहाँ पे जो भी पहला टेबल है तुम उसका नाम लिखोगे। ओके, join your second table, get table 1, join table 2, right? On उसके बाद जो तुम्हारा मैचिंग कॉलम है फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल का, वो तुम्हें देना है, वो तुम्हें मेंशन करना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टेबल 1 डॉट जो भी मैचिंग कॉलम होगा वो आईडी है, कुछ भी होगा जो भी, और टेबल 2 का उसी की रिगार्डिंग जो प्राइमरी की थी हमारी फर्स्ट टेबल में, उसकी फॉरेन की जो भी होगी सेकंड टेबल में, वो तुम्हें मेंशन करना है इस टेबल, राइट? यहाँ पे, राइट? तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ जॉइन। क्या है? सबसे पहले हम दो टेबल ज्वाइन करने, बहुत इजी है भाई। टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ऑन, यहाँ पे आपको कॉलम का नाम मेंशन करना है दोनों भी, जिसके बेसिस पे आप उसको ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ SQL स्टेटमेंट, सॉरी join clause. Okay, so here I have done the same, right? I want to join students table with a courses table. Okay, I hope my camera is okay. Yeah, it is working, right? I am joining. Yeah, so I am joining students table with a courses table, right? So I am students join courses on what? स्टूडेंट का आईडी मैं मैच करूंगा कोर्सेस वाले स्टूडेंट के आईडी से, राइट? यहाँ पे देखो इक्वल्स टू कोर्सेस डॉट स्टूडेंट आईडी। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन राइट द इनर जॉइन क्वेरी। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्वेरी है दिस इज आवर इनर जॉइन क्वेरी। ओके, if I execute this you can see that all the matching combinations of students and their courses are visible to you, right? Student 1 has taken the SQL course, right? Student 2 Priya has taken Python course, right? Third one taken Power BI, like that. Okay, you can also see the student ID in front of that. Okay, so it will just take a matching elements in inner join. Okay, अब यहाँ पे और एक चीज है, जैसे कि आप अपने यहाँ पे अभी पूरा का पूरा टेबल का नाम लिख दिया। अब ये टेबल मुझे फिर से ना लिखना पड़े, इसलिए वी गिव सम एलियास, राइट, टू टेबल्स। ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेरी यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस। स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे यस एलियास दिया और कोर्सेज को मैंने सी एलियास दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स लिखने की जगह मैं सिर्फ यस लिख सकता हूँ और यहाँ पे सिर्फ सी इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी को अगर आप रन करोगे देन आल्सो यू विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, एक तरीके से इट्स जस्ट अ ट्रिक टू write a fast query, right? Instead of writing whole table name again and again and again. Okay, sometimes there are city, right? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होती है, सबकी होती है बहुत बड़ी बड़ी, उस टाइम पे
इतना लिखने से अच्छा है we give some areas right to your table. Okay, so this is a inner join. इनर जॉइन क्या करता है, जो सिर्फ मैचिंग रोज होगी उसको ही वो कंबाइन करेगा और आउटपुट शो करेगा, थ्रो करेगा और उसी को वो राइट करेगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द इनर जॉइन. नाउ व्हाट इज द लेफ्ट जॉइन? ठीक है, व्हाट इज द लेफ्ट जॉइन? सो लेफ्ट जॉइन व्हाट, इट कीप्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल and the combined rows from the right tables. Sorry, common matching rows from the right table. Okay, it keeps all the rows from the left table and the matching rows from the right table. ठीक है, मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट वाला टेबल है, ठीक है, जो पहला टेबल तुमने लिया, ये सारे की सारी रोज उसमें आएंगी और उसकी जो भी मैचिंग आए रोज थी तुम्हारी राइट टेबल में वो सब आएगी और जो नहीं है मैचिंग वहां पे तुम्हें नल शो करेगा एक तरीके से. ठीक है, वी विल सी द आउटपुट. यहाँ पे बस क्वेरी बहुत इजी सेम सिंटैक्स है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सिर्फ ज्वाइन की जगह यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन इस्तेमाल किया है. ठीक है, जस्ट वी हैव यूज्ड लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेस, राइट, लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेस ऑन students.id and courses.student.id. ओके, यहाँ पे भी आप वो एरियाज यूज कर सकते हो जिस तरह से मैंने बताया था. आप यहाँ पे यस कर सकते हो, यहाँ पे सी कर सकते हो. You can shortly write it as yes.id and c.student.id. Okay, and you can execute this. And now you can see in the output. You can see in the output that your left table is fully visible, right? We have the 8 total columns, right, in our left students table. लेकिन अब आप अगर 7 और 8 देखोगे, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोर्स लिया नहीं है. ठीक है, तो हमारे कोर्सेज टेबल में इनकी कोई एंट्री थी ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे 7 और 8 नंबर का स्टूडेंट आईडी था ही नहीं, इसलिए इज शोइंग नल, राइट, इट नॉट गेट मैच, राइट, hence there is null. That is the left join. यहाँ पे लेफ्ट का तुम्हारा पूरा टेबल दिखेगा, राइट की सब सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रोज यहाँ पे दिखेगी. ओके, दैट इज द लेफ्ट जॉइन. ठीक है, ओके, so I hope that is also you can see in the diagram, right? I have shown here somewhere else. Okay, so that is a left join. The second thing is the third thing is the right join. Okay, अब जिस तरीके से लेफ्ट जॉइन में हुआ था उसी तरीके से राइट जॉइन में होगा. क्या होगा कि राइट टेबल जो है तुम्हारा सेकंड टेबल, उसकी सारी एंट्रीज दिखेगी तुम्हें. वो टेबल पूरा तरीके से शो होगा और उसके हिसाब से जो मैचिंग रोज है लेफ्ट टेबल की वो तुम्हें शो करेगी, राइट. इट विल शो ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग रोज, right, and the matching rows from the left table. Okay, so that is the right join. Okay, it keeps all the rows from the right table and the matching rows from the left table. Okay, so we will execute that again and you can see देखो जितने सारे कोर्स थे अपने, ठीक है, अपने थे टोटल 7 कोर्स. So all the courses are visible and from that you can get the information कि जो मशीन लर्निंग का जो कोर्स था हमारा लास्ट, ठीक है, उस कोर्स को किसी ने अप्लाई ही नहीं किया. ठीक है, no one has applied to machine learning course, right? Hence there is null. Okay, and you can see in the left table you can directly see the null entry in your entire row, right, of the left table. Okay, so that is the right join, right? I hope you get this, right? You have to keep all the rows from the right table and the matching rows from the left. Okay, that is the right join. Okay. So up till now we have seen inner, left, right. Okay, the third one is a full join. Okay, full join क्या? देखो full join नाम में ही मतलब है. Full join में मतलब क्या? It keeps all the rows after joining the two tables. ओके, आप दोनों टेबल ज्वाइन कर रहे हो. इसके बाद
जो रोज मैच नहीं हुई है, जैसे लेफ्ट साइड की कुछ है और राइट साइड की कुछ है, वो दोनों भी वो पर्टिकुलर जॉइन शो करेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ फुल आउटर जॉइन. ओके, वी विल एग्जीक्यूट दिस वन आल्सो. ओके, हियर यू कैन सी द आउटपुट, राइट. अब देखो यहाँ पे 7 और 8 नंबर जिन्होंने कोई कोर्स लिया ही नहीं था, उनकी भी एंट्री दिखा रही है, दिख रही है. और यहाँ पे वो एंट्री भी आप देख रहे हो जहाँ पे कोर्स है, एक पर्टिकुलर कोर्स, एक सपोज एक इंस्टीट्यूट बेच रही है और उस पे कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं किया है मशीन लर्निंग को. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ फुल आउटर जॉइन, जहाँ पे आप पूरा ओवरऑल डेटा देख सकते हो दोनों टेबल्स का. ठीक है, so that is a full outer join. Okay. Again, this particular thing, right? You can show by areas. I already told how to mention the areas to tables. Right? यहाँ पे just mention करके full outer join courses को C mention करके just you can give that particular areas. Right, when you are mentioning that. Okay, so that is full outer join. The next one is a cross join. Okay, cross join. अब cross join क्या होता है भाई? So cross join is like Cartesian product. Okay, Cartesian product मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं अभी इस बार, हर एक रो, फर्स्ट टेबल की हर एक रो सेकंड टेबल की हर एक रो से मैच करेंगे. अब ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वेदर इट इज मैचिंग और नॉट. यहाँ पे तुम्हें वो कंडीशन देनी, जो ऑन कंडीशन दे रहे हैं ना हम, इनर जॉइन में, लेफ्ट जॉइन में, राइट जॉइन में, वी आर नॉट गिविंग दैट इन द क्रॉस जॉइन टेबल. ओके, यहाँ पे तुम सीधा लिख दो कि द टेबल लाइक select star from table 1 cross join table 2. We don't need to mention the on condition here. Okay, और ये क्या करेगा, हर एक रो, राइट, हमारी फर्स्ट टेबल की सेकंड टेबल के हर एक रो से मैच करेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द Cartesian product. So the output will be always like the multiplication of the rows of the two tables, right? Suppose we have the first table we have 8 rows and second table we have 7 rows, right? So the output, right, will be the multiplication of these two. 56. There will be 56 rows of a table of a 56 rows. Okay, so let's run this cross join. Okay, so we have students tables of 8 rows and courses table of 7 rows. Okay, and here you can see here in the bottom, okay, right bottom, there are 56 rows. Okay, here also you can see here there are 56 rows. So what exactly it is doing, right? It is multiplying every single rows of the first table to the every single rows of a second table. मैटर नहीं करता भाई ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट मैचिंग दैट, राइट, विथ एवरी सिंगल रो. दैट इज अ क्रॉस जॉइन. Okay, and many of the interpretation are based on this particular cross join. Okay, so it makes every possible combination of the rows from the board table. It makes every single combination of the every possible combination of the rows from the board tables. Okay, and now the last one is self join. Okay, self join मतलब क्या, नाम में ही इसका अर्थ है. देखो गाइस, सेल्फ जॉइंस मतलब we are joining the table to itself, right? So self join is a regular join where a table is joined with itself. Okay, so we have students table, we are trying to join it to itself, right? तो उसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है. So here we have to mention the condition
we can also apply the cross join in a single table also. Okay, let's try this, whether we can do that. Okay, we have two tables, students S1 join students S2. Okay, yeah, I want to do cross join. Yes, we can do this, right? We are just now these particular rows we have to join with, we have to compare it with all the rows of the column. Okay, so we have compared with this. Yes, we compared with first row, compared with second row, like this for all that 8 rows, right? You can see here, sorry, yeah, for all that 8 rows. And also again the second row is again compared with all 8 rows, the second is third one is compared with 8 rows, like that. Okay, that is a Cartesian product. Okay, so this also we can do one single table also, right? And if we have to give some condition, then don't use cross join here, right? You have to, if you have to join to the, you have to use the self join with some condition, right? Then also you can mention that in on clause, so you can just simply use simple join here. Okay, join on and just mention the condition, right? Okay, suppose I want to join this my students table with the students table on the basis of the city, right? On the basis of the city. Okay, let's drop this one, and here you get that output where my these two rows here I get the output of around 22 rows. Okay, and these rows are get matched by the, with the help of the city column, right? The matching city get matched here. Okay, here you can see the Raj is matched with the Raj. Priya, this Raj is also matched with the Priya because he has the same city. Raj is matched with the Ankit because he has the same city, right? Priya is again get matched with the Raj, right? Because he has the same city, right? Now here there is one problem, like if the person has the same name, right? These also get matching, right? How I can avoid that? So you have to just mention here one more condition, like I don't want the IDs, right? I don't want to match the peoples of the same ID, right? So I will give a condition that s1 dot id should not be equals to id of my second column, right? So that's it. Okay, and if you run this, then you can see the difference that Raj is not getting to not get matched to Raj again. Okay, it get matched to some different peoples here. Okay, right? So that is a self join. Okay, यहाँ पे अगर एक टेबल है, उसी टेबल को फिर से आपको ज्वाइन करना है खुद के साथ, so that is a self join. Okay, I hope you get all the joins, understanding of all the joins. Okay, total कितने joins है? Inner join, left join, right join, cross join, self join. Okay, and outer join, right? So there are total 7 parts of the joins. Okay. 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 So thank you so much, guys, for watching this particular video. And yeah, we'll see the next concept. I think we'll see aggregate function in our next video. Okay. So if you are watching this and still not subscribe this channel, so please guys subscribe this particular channel. Okay. And I'm trying to improve the quality of video day by day. Okay, and I want to give a pretty much good content in some next days, right? Some advanced, we will see some advanced SQL topics
some SQL questions also, tricky questions, hard questions, right? That we'll see after completing this playlist. Okay, so please watch, like, comment, and subscribe this particular channel, and please share with that fresher friends, right? That will be very needful and fruitful for him. Okay, so yeah, thank you so much. Thank